Good morning, students. Open your maths textbook on page number 108. Write down date and day on mixed exercise 2. So today we are going to start mixed exercise 2. First question is write each of the following in decimal. तो जो भी गिवन नंबर है हमने इन सब फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. So let's start. Part A is 64 upon 100. It's equal to 0.64. हमने चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस हैं 2. तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, राइट. सो 0.64. पार्ट बी इज 1/6. अगर 1/5 होता तो हम डिनोमिनेटर में 0 बनाने का ट्राई करते, लेकिन हम 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि हमारे पास 0 की फॉर्म में हो. जैसे 6 को किसी ऐसे नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कि हमारे पास 10, 100 या 1000 आए. फॉर दिस सम वी विल सॉल्व इट्स डिवीजन. तो डिवीजन सॉल्व करेंगे. 6 इज द डिनोमिनेटर, सो 6 से 1 को डिवाइड करेंगे. सो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, सो वी विल प्लेस 0 पॉइंट के बाद फिर 0, सब्ट्रैक्ट 1, ब्रिंग डाउन 0. तो 0 को फिर नीचे लेके आएंगे. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. So 12 is greater than 10. So we will place 1 here. 6 1 जा 6. Subtract 10 minus 6. 4. Again we will place 0 and bring down that 0 with 4. 40. 6 6 are 36. Again 4 is the remainder. अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर भी 4 0 40 करके फिर अगेन 1 6 6 6 आएगा. सो वी विल राइट इट्स आंसर एज 0.16. दिस इज decimal form of fraction 1/6. We'll solve it C and D part yourself. Now second sum is write each of the following as fractions. So part A is 0.6. तो इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 7 अपॉन डेसिमल की प्लेस में 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 0. 7 upon 10 is the correct answer. B part is 0.57. So we will write it as 57 upon 1. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 जीरोस प्लेस करेंगे. सो इट इज इक्वल टू 57 upon 100. So you will solve it C and D part. So sum number 3 is write the following figure. A part 7.61. 7.61. It is correct answer. 19.30. 19.30. Right? So I have solved A and B parts and you will solve C and D part yourself. Next, sum number 4. Write the following in short form. So part A of sum number 4 is 700 plus 40 plus 6 plus 7 upon 10 plus 6 upon 100. तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 700 प्लस 40 प्लस 6, ये वंस प्लेस है, टेंस एंड 100. सो 746. इसके बाद जब फ्रैक्शन में स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो हम डेसिमल को प्लेस करेंगे. 0.7 7 के पॉइंट 10 है तो डेसिमल के इमीडिएटली बाद आएगा 7 देन 6, बिकॉज इसके नीचे 100 है. ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है. सो इट इज इक्वल टू 746.76. So students, you will solve its B part yourself. So sum number 5 is convert into like decimals. So part A is 47.40, 3.17, 6.1, 4.2. So ये 2 decimal place number. Yes, 2 decimal places number है. 2 decimal places, 1 decimal place and 1 decimal place. So we will convert 1 decimal places into 2 decimal places by adding 0 at the right side of this number. 47.40, 3.17, 6.10 or 4.20. Right? This is our answer. Clear? Next is B, 173.43, 300.4, 46.101 and 6.121. So highest decimal places are 3. तो 3 decimal places है
तो जो 2 डेसिमल प्लेसेस है या 1 डेसिमल प्लेसेस है उसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। तो 0.43 2 डेसिमल प्लेसेस था, इसके साथ हम 0 प्लेस करेंगे। नेक्स्ट नंबर 1 डेसिमल प्लेस है, इसके साथ हम डबल 0 अटैच करेंगे। नेक्स्ट इज ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस एंड नेक्स्ट इज अगेन also a 3 decimal places number, right? So these are like decimals. You will solve its remaining parts C and D. Sum number 6 is compare the following decimals. Part A 173.61 and 173.16. So what is the first step? First step is to compare whole numbers. Compare whole numbers. So whole numbers को compare करेंगे. Whole numbers are 173 and 173, both are equal. So what is the next step? Next step is to compare its 10th place number. 10th place number कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर में 10th place number 6 है और सेकेंड में 1 है. So it is clear 6 is greater than 1. So 173.61 is greater than 173.16, right? So you will solve its B part. Sum number 7, add the following. So part A 5.6 plus 3.6, 6 plus 6 12. So we will carry 1 to 1's place. Decimal 5 plus 3 8 plus 1 9. And part C 2 plus 3 5, 1 plus 2 3, 3 plus 5 8, then decimal 6 plus 2 8, 3 plus 1 4. So 48.835 is our answer. So you will solve part B and D yourself. Now sum number 8 is subtract the following. So part A is 57.134 minus 31.024. 4 minus 4 0, 3 minus 2 1, 1 minus 0 again 1, decimal point 7 minus 1 6, 5 minus 3 2. So it is equal to 26.10, right? Next part C 56.48 minus 26.42, 8 minus 6 sorry 8 minus 2 6, 4 minus 4 0, 0.6 minus 6 0, 5 minus 2 3. So it is equal to 30.06, right? So you will solve its B and D part yourself. Next is sum number 9 and 10. We will solve these sums in a sum number 9th is part A 46.31 from 90.00. From तो 90.00 से हमने 46.31 माइनस करना है, right? So 10 0 minus 1 is not possible. So 10 minus 1 9, and here becomes 9. 9 minus 3 6, and here 10 में से 1 borrow किया 9. 9 minus 6 3, and here becomes 8. 8 minus 4 4. 43.69 is our answer. So it has only two parts. I have solved one part and you will solve another part. Now sum number 10, simplify. Part A 638.92 plus 131.11 minus 213.48. So we will solve this sum by using step. Step 1 is, first of all we will add these two numbers. 638.92 plus 131.11, right? So add these two numbers. 2 plus 1 3, 9 plus 1 10, 1 will carry over 1's place. 8 plus 1 9 plus 1 10, 1 will carry over 10's place. 3 plus 3 6 plus 1 7, 6 plus 1 7. So it is equal to 770.03. Now step 2. Step 2 is sum of these numbers is equal to this minus this. So 770.03 minus 213.48, right? So we will subtract these two values. So 13 minus 5, and here becomes 9. 9 minus 4 5, and here becomes 9 also. 9 minus 3 6. 6 minus 1
5 and 7 minus 2 5. So it is equal to 556.55. Next part B is 338.16 plus 121.11 minus 36.16. So first step is to add first two numbers. तो फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करेंगे 338.16 प्लस 121.11, राइट. 6 plus 1 7, 1 plus 1 2, 8 plus 1 9, 3 plus 2 5, 3 plus 1 4. So it is equal to 459.27. Next step 2 is sum of these numbers. 459.27 minus 36.16, right? So we will subtract these two numbers. 7 minus 6 1, 2 minus 1 1, 9 minus 6 3, 5 minus 3 2, 4 minus 0 4. So it is equal to 423.11. Now part C is 524.38 minus 116.12 minus 111.21. So what is the first step? To solve first two numbers. तो फर्स्ट टू नंबर्स को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टू नंबर में साइन कौन सा? माइनस का. तो वी विल सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स. 8 minus 2 6, 3 minus 1 2, 4 minus 6 is not possible. So we will borrow 1 10 from 2 tens. 14 minus 6 8 and 1 minus 1 0, 4 5 minus 1 4. So it is equal to 408.26. Step 2 is 408.26 minus 111.21. Subtract these two values. 6 minus 1 5, 2 minus 2 0, 8 minus 1 7, 0 minus 1 is not possible. So we will borrow 100 from 400s. So it is 10 tens. 10 minus 1 9, 3 minus 1 2. So it is equal to 297.05. Now students, so I have solved A, B and C part. You will solve its D part. Next lab activity. Students, आपकी सभी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हैं. जिस स्टूडेंट की एक्टिविटी मेरे पास आती है आई विल मार्क देयर असेसमेंट, अदरवाइज देयर विल बी नो असेसमेंट, राइट. अगर आपका शो एंड टेल कंपटीशन होगा तब भी सभी स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, मॉडल जो भी हैं अवेलेबल होने चाहिए, राइट. एट दैट टाइम आई विल नॉट accept anyone's excuse. Fine. Now note down one more activity of decimal chapter of maths. तो इसकी एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? चार्ट पेपर, पेन और इरेजर. अपने चार्ट में क्या शो करना है कि फ्रैक्शंस में से डेसिमल कैसे फॉर्म होते हैं. अपने एज इट इज़ ही करना है एक चार्ट पेपर पे, लेकिन आपको प्रॉपर ऑर्डर में आपने ये सब नोट डाउन करना है. और यू विल यूज स्केच इंस्टेड ऑफ पेंसिल. तो पेंसिल की बजाय आपने स्केच यूज करना है. 1/10 0.1, 1/100 0.01. तो इसका ये आंसर नीचे गिवन है. ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. 3.50 का डेसिमल 0.6, 3.500 का 0.06, 3.5000 का 0.06. इसमें बताया गया कि जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर 10 हो तब डेसिमल क्या होता है, 100 होने पे क्या बन जाता है. अगर न्यूमरेटर में 1 नंबर ही हो, 1000 होने पे, 10,000 पे या लाख पे, राइट. इन द सेम वे यू विल नोट डाउन दीज नंबर्स. तो 1.20 का 0.5, 1.200 का 0.05 एंड सो ऑन. तो आगे आपने इसको कंटिन्यू करना है. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए. Fine. And then try to note down these numbers on your chart paper, right. You will prepare this chart paper on Sunday, right. और मुझे मंडे तक आपका ये
चार्ट पेपर की एक्टिविटी रिसीव होनी चाहिए. सो यू विल कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ मिक्स एक्सरसाइज 2. फाइन, थैंक यू.